आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हो? आज का सेशन नंबर 3 है सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। हम लास्ट 2 डेज से हमने इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए और गेट EEC स्टूडेंट्स जितने लोग गेट इंस्ट्रूमेंट पेपर को लिखना चाहते हो उसके लिए हमने सेंसर्स लेके आ रहे हैं। चलो आज भी हम सेंसर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फटाफट जितने लोग क्लास में लाइव हुए हैं जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट we'll go today more questions. First answer this question. ये क्वेश्चन है गेट 1996 का क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज केम एज अ मैच द फॉलोइंग, मैच द डिवाइस विथ इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। तो गेट 1996 का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर कर दीजिए। समटाइम्स आपको MSQ को सीरीज में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने पुराना क्वेश्चन को भी कलेक्शन किया। आई हैव कलेक्टेड द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, so try to answer this question. Match the device with its working principle. So first list he has given the list of the instrument, second list he has given their principles, working principle. Good evening to one and all. फटाफट आंसर करो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। So Bourdon gauge, Pirani gauge, semiconductor strain gauge, bimetallic strip. This is the principle. Thermal conductivity, thermal coefficient of expression, piezoresistive effect, photoelectric effect, deformation of element. This is deformation of element. So first Bourdon gauge goes to what? Pirani gauge goes to what? Semiconductor strain gauge goes to what? Bimetallic strip gauge goes to what? Bourdon gauge is basically deformation of element. It is not related to temperature. Bimetallic strip is related to temperature. Piezoresistive effect is related to semiconductor strain gauge. Photoelectric effect, nothing is there here. So deformation of element. Bourdon tube is a C-type element. Bourdon tube is a C-type element. So whenever the gas enters, whenever the pressure enters, there is some expansion. So A goes to I, my dear. Next, Pirani gauge is related to low pressure, that is based upon the thermal conductivity. अगर आपका नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स कम है तो वो हीट का कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। तो B goes to Pirani gauge goes to thermal conductivity, so B goes to my dear. Semiconductor strain gauge works on the principle of piezoresistive effect, so C goes to Z. Bimetallic strip works on the thermal coefficient of expansion, not expression, expansion. Bimetallic strip goes to. So simple question है, all of you clear dear? या हर्षा तिवारी, ऋषि गुप्ता, जितने लोग सेशन को देख रहे, तो all of you clear about this question? Match the following गेट 1996 का क्वेश्चन है। Let us go for the next question. This is the next question. This question gate 1997. This also match the following. Try to answer this question. Rotameter, tracer, rotational speed, temperature, tachometer, pyrometer, roughness. Yeah, sorry. This is the applications. This is the match the following. These are the instruments and their measurements. Okay, so these are the instruments and these are the measurements. Rotameter, B tachometer, C tracer, D pyrometer, E rotational speed, F roughness, G temperature, H flow rate. So what is going to happen now? Rotameter, that is related to what? Rotameter is related to flow rate, right? Yes or not? So rotameter is related to flow rate, so A goes to H. Next, tachometer is related to speed, so B goes to E.
B goes to what? B goes to E, my dear. Next, tracer. Tracer is nothing but that is related to roughness. So C goes to next, pyrometer. Pyrometer is related to temperature. So 2 E, my dear. Okay, so these are the options. Okay, simple questions है. Match the following questions भी आ सकते हैं एग्जाम में, मत करना. Sometimes आजकल गेट का conceptual questions में very easy questions आ रहे हैं, and not only for this gate related exams like BARC, D और DL, जितने exams आप लिखने के लिए जा रहे हो वो पूरा. Let us see this question, my dear. Try to answer this question. Question came in GATE 2015 by IIT Kanpur. So exactly, now the same GATE exam IIT is going to conduct this paper. So try to answer this question. Fatafat. A liquid level measurement system employing a radioisotope is mounted on a tank as shown in the figure. The absorption coefficient of water for the radiation is given as 7.7 per meter. If the length of the water in the tank is reduced from 100 mm to 90 mm, so first it was 100 mm, reduce it to how much? Reduce it to 90 mm. It was reduced to how much? It was 90. So from 100 mm was reduced to 90 mm. The percentage change in the radiation intensity received by the detector, neglecting the absorption of the radiation by the 8%. This is a question. क्या है? A question liquid level measurement करने के लिए one of the technique है. Okay. ये मेजरली गेट सिलेबस से ही होता है मोहन साई, मेजरली गेट सिलेबस ही होता है. चलो, तो दिस क्वेश्चन इज मेजरली बेसिकली वन ऑफ द मेथडोलॉजी यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लेवल मेजरमेंट करने के लिए नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है. वन ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, वी आर सेंडिंग सम सोर्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ट्रांसमीटर, देयर इज अ रिसीवर हियर. सो हाउ मच अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू हैपन बाय दिस पर्टिकुलर लिक्विड, ये पर्टिकुलर लिक्विड का लेवल के ऊपर डिपेंड होता है. अगर लिक्विड लेवल ज्यादा है, इट टेक्स मोर अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड लेस अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन. अगर लिक्विड लेवल कम है, डेफिनेटली रेडिएशन इंटेंसिटी. ओके, सो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन आंसर करने के लिए बीर लैम्बर्ट्स का होना चाहिए. So intensity of the radiation transmitted is always equal to intensity of the radiation given into absorption coefficient E minus A to T is the thickness. Okay, so where A is the absorption coefficient. हमको क्वेश्चन में दिया है absorption coefficient of water is given as 1.7 per meter. Okay, so first, what is the first thing? First of all, whenever it is having 100 meters distance, so whenever it is having 100 meter distance, I can write this IT1 is equal to II to e power minus, what is the absorption coefficient? Absorption coefficient is 7.7 meter. So I can write this as 7.7 per meter into the thickness was initially how much? It was 100 mm. So 100 mm means I can write 100 into 10 power minus 3. So if you simplify, what happens to this expression? This will be II into e power 7.7, 10 square into 10 power minus 3, 10 power minus 1. So 77 into 10 power minus 2, from 0.77. Am I right or not? Am I right or not? सही है. 10 square into 10 power minus 3, 10 power minus 1, 77 into 10 power minus 0.7 होगा. So this is at 100 mm distance. Similarly, IT2, if I am taking, if it is moving from 100 mm to 90 mm, then what happens? The II and e power 7.7 per meter, the water absorption coefficient, into 90 mm. That means 90 into 10 to the power of minus 3. Just so meter gets cancelled. So if you simplify, how much you are going to, please try to answer. So 90 into 10, 90 into 7.7. Answer कर दो बेटा. 90 into 7.7. These are very good questions. 93 हो रहा है. 93 divided by 1000. Coming around 0.693. So it is coming as point. So see, question asked is what? Question asked is the percentage change in the radiation intensity by the detector neglecting the absorption of the.
Okay, so what is the percentage change? So this one is initially at full level at 100 meters liquid level, and whereas this one a level of how much? 90 meters. 90 meters. Okay, so let us take this is a standard true value. Okay, and because of the reduction level we are getting this particular thing. Let us take this a measurement value. तो परसेंटेज एरर को कैसा निकाल सकते हैं? तो परसेंटेज एरर को हम निकाल सकते हैं मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100 को निकाल सकते हैं ऐसा. यस सर नॉट? परफेक्ट. तो मेजरमेंट वैल्यू ए होगा, तो दैट इज आई इंटू पावर माइनस 0.93 है. ओके, माइनस ट्रू वैल्यू क्या है? आई इंटू पावर माइनस 0.77 है डिवाइड बाई आई इंटू पावर माइनस 0.77 टू 100. तो उसके कंटिन्यूशन में देखो परसेंटेज क्या है. तो परसेंटेज एरर का क्या होगा? अगर आपने आई कॉमन लिए तो क्या होगा? ई पावर माइनस 0.63 पावर माइनस 0.6 माइनस दिस इज 0.77 e power minus 0.77 by power minus 0.77 इंटू होगा. सिंप्लीफाई करके बताए कितना आएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0.6 एक्सपोनेंशियल by exponential hundred. Approximately you are going to get 8%. 8% is the right answer. Understood? So 8% is going to be the approximately you are going to get a very good question, इंडस्ट्रियल क्वेश्चन. आज मैंने ऐसा क्वेश्चंस लेके आया हूं क्योंकि आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन. बच्चों देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन द सेशन? ऋषि गुप्ता, एटर्निटी आपने मुझे कमेंट भेजा. आई हैव सीन योर कमेंट्स दैट यू आर नॉट गेटिंग द पीडीएफ. इमीडिएटली इन्फॉर्म टू आवर मैनेजमेंट दैट बैकएंड टीम ऑफ द एसएमई टीम को मैंने बताया. आई थिंक योर इश्यू इज रिजॉल्व्ड. दे हैव पोस्टेड योर पीडीएफ आल्सो. मेरे दोस्तों, जितने लोग ये सेशन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा है? Whether you are from instrumentation background or electrical background or background, once after you seeing this particular gate question, आपके माइंड में क्या आ रहा है? आफ्टर सीइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है? आईआईटी कानपुर का साइकोलॉजी कैसा होता है? गेट 2015 में आईआईटी कानपुर ऐसा क्वेश्चन दिया है. तो बेस्ड ऑन दिस व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, यस, मोस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन, अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज करते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स हमारा इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ना. अगर आपने एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, कोई ना कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी, definitely there are many applications in the liquid level is a liquid level measurement can cause contact methods है, but contact methods are always dangerous. There is a possibility, for example, if you take petrochemical industry, in petrochemical industry क्या होता है? साउंड प्रॉब्लम, आवाज आ रहा है? नहीं, सॉरी. नाउ इज इट क्लियर? Any doubt? So whenever is a solved resolved, these are the application related questions. Okay, let us go for the next question. Next question, let us go. So this is GATE 1992 question. GATE 1992 19922 का क्वेश्चन. फटाफट आंसर कर दीजिए. Make it fast.
A semiconductor strain gauge has given 4 statements. Has a much higher gauge factor than that of a metal wire gauge, employs piezoelectric property of undoped silicon, does not require temperature compensation, exhibit very little gauge factor variation as compared to that of metal gauges. Which of the statements are true actually? Question में पूरा confusion ना हो. This question is asking about the true statement. Has a much higher gauge factor? Yes or no? Gauge factor सही है, सही है. ऑप्शन ये सही है. It employs the piezoelectric property. ये भी सही है ना? No, it's wrong. It employs what property? It employs piezoresistive property, my dear. So resistive property. Piezoelectric property is different. Piezoresistive properties does not require temperature compensation. No, it requires a temperature compensation. Next, exhibits very little gauge factor variation as compared to that of metal. No, so only option A is the right answer. सही है? तैयार हैं? Eternity. रेडी? सब सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया हूं. स्लोली मेरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहे हैं. चलो, नाउ लेट अस मूव फॉर द क्वेश्चन. गेट 1994 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए. 1994 का है, आंसर बताइए. आंसर आंसर क्या है? A unity ratio quarter bit strain measuring circuit produces an output of 1 millivolt for a strain of 500 microstrain. And the bridge excitation is 4 volts. तो ये क्वेश्चन को कैसा समझना है? Always I am telling, quarter bridge is most important. Quarter को भूलना मत. उत्तर तो क्वार्टर को पूरा माइंड में फिक्स कर दिया. गेट एग्जाम होने के बाद ये क्वार्टर ब्रिज का प्रॉब्लम आता नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन तो क्वार्टर को फैन होगी. So this is the quarter bridge. The quarter bridge, what happens? One of the resistance change, meaning all the resistance same. So then only we can apply this formula. And one of the important point is the meter resistance. So quarter bridge का expression क्या होगा? Quarter bridge का expression होगा S/4 into delta R by R. ये one of the famous expression. Okay? Quarter bridge का expression. के बाद हमने गेज फैक्टर का एक्सप्रेशन. गेज फैक्टर का क्या है? गेज फैक्टर का R by delta L by. So this is the gauge factor. From this, what I can write, my dear? So I can write quarter bridge equal to by 4. यहाँ del R by R है ना? ऐसा लिख सकते. गेज फैक्टर इन del L by लिख. अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? Produces an output of how much? Output of 1 millivolt. So this one I am taking as 2 10 power minus. Supply voltage कितना दिया है? Supply voltage दिया है 4 volt. And gauge factor is asked for a strain of 500 micro. Gauge factor is 500 micro. तो यहाँ से 4 and 4 gets. So gauge factor equal to 10 power minus 5 500 into 10 power minus 10 power minus that becomes 1000 divided by 500. Right answer is 2 होगा. So सही आंसर होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन को मिस मत करना. जितने लोग मेरा सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2 को फॉलो किया है, क्वेश्चन को आराम से अप्लाई कर. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम आल्सो वी आर गोइंग टू गेट वन क्वेश्चन ऑन द गेज फैक्टर.
ऑल ऑफ यू रेडी माय डियर? मजा आ रहा है सेशन को? 15 पीपल आर वाचिंग, मुझे 15 पीपल का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि हमारा सेशंस जो कुछ है ना वेरी वेरी लिमिटेड सेशन है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है। जितने लोग सेशन को देख रहे, मुझे जितने लोग सेशन पर अटेंडेंस, अटेंडेंस इज इन फॉर्म ऑफ योर ब्रांच। व्हाट इज योर ब्रांच, प्लीज मेंशन ओवर देयर सो दैट मुझे भी एनर्जी आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट 1998 क्वेश्चन, स्ट्रेन गेजेस में आ चुका है क्वेश्चन। ट्राई टू आंसर दिस फटाफट। ECE instrumentation, Praveen Tiwari, very good. A strain gauge has a gauge factor of -100. The type of strain gauge is -100 means always remember conductors are having two types of type strain type strain gauge है, type strain gauge positive, so definitely type semi doubt it. फटाफट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जा रहा हूं मैंने। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये 2001 में आ चुका है, ये 2001 का क्वेश्चन है। A strain gauge is attached to a bar of length which is subjected to a tensile force. The nominal resistance of the strain gauge is, the changes in resistance and elongation of the bar are 0.35 ohm, 0.2 mm. The gauge factor of the strain. So this is what the L is, what the R is given, what the delta R is given, what the delta L. तो यहाँ से आप डायरेक्टली गेज फैक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गेज फैक्टर इज R by R by L by। एक ही इच्छा है, प्लीज ये सेशन अटेंड होने के बाद स्ट्रेन गेज क्वेश्चन को डबल स्टूडेंट और EC स्टूडेंट जितने लोग ये सेशन को देख रहे हैं, सेशन 1 सेशन, ये 3 सेशन के बाद आपके माइंड में ओके। सो डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा इज गिवन 0.35 माइडी, एंड आर का वैल्यू कितना है, एंड डेल्टा एल का वैल्यू कितना है, डेल्टा एल इज गिवन एज 0.2 of the unit divided by 20 centimeters, so 20 10 power minus. Please simplify and tell me what is the answer. Please simplify and tell me आंसर कितना आ रहा है। सर will be not possible, तो कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है? 3.5। चलो let us go for the next question. This question GATE 2005 का क्वेश्चन है। Data given here is resistance of the strain gauge is 120 ohms, gauge factor is equal to 2, strain is equal to 0.02. Okay, so they are connected in a Wheatstone bridge like this. So this is R plus delta R minus delta R. Try to answer this question, my dear. Two strain gauges with the specifications given above are mounted on a structural member in a push-pull configuration, connected in a Wheatstone bridge along the two standard resistance. So this is R plus delta R. आपको clearly दिख रहा है ना? R minus delta R plus delta R, this is minus this 10R and this is, तो कैसे सॉल्व करना है? How to solve this question? First let me take this diagram. So what is given in the question? R, one more resistor,
क्या दिया है देखो, आर माइनस डेल्टा और आर प्लस आर माइनस आर 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 प्लस. Okay, so connected to supply voltage, what we call. Question is a conceptual understanding of strain gauges and bridges and op amps. Okay, yes, polarity of op amp. Okay, polarity of op amp is minus and plus. Polarity of op amp. Okay, so के बाद एक रेसिस्टर एंड फीडबैक ऑप एम्प है, क्या ले रहा हूं इधर, रेसिस्टर आर connected op amp and plus R connected NOR. Okay, and to the positive this is connected. And क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द करंट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, द करंट माइट गेट, दिस करंट गेट्स स्प्लिट व्हाट्स, द करंट कम्स अप टू दिस, current cannot enter into ideal op amp. If you consider this as the ideal op amp, so current cannot enter into ideal op amp. अभी क्या होगा, ये two resistors will be, okay, so यहाँ मैंने voltage जो अप्लाई कर सकते हूँ सर, Q. So at A, if I apply the voltage division rule, what is the voltage division? Ground resistance R by R plus R in supply voltage. Supply voltage are not given. Supply voltage, that means you are going to get 0.5 V. V is given as V only 0.5. No, optical is not possible. Atul Sharma, focus on the sensors class. So VA is equal to R by 2R into V 1.5 V. लेकिन at C हमने voltage apply नहीं कर सकते. Okay, so we got the 0.5 V. So but the VA is connected to P. So this is going to be connected. Right or not? Both are in the same. Got it? So this is VP and the VP and the VQ both are same. Both are same. Clear हो गया? Clear हो गया ये concept? कितने लोग सेशन को देख रहे हैं, ये सेशन तो क्लैरिटी हो गया अब तक. तो फर्स्ट हमने वोल्टेज एट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, वोल्टेज एट ए वी आर यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल. वोल्टेज डिवीजन रूल से हमको 0.5 V आ गया. उसके बाद दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज कनेक्टेड टू P एंड Q एंड VQ सेम हो गया. क्लियर? नेक्स्ट, what next? See, I want to find out the voltage. To find out the voltage at C, what I am doing, I am using some nodal analysis. C minus EB by R minus delta or minus by R plus delta or C minus by R is equal to 0 or not. So at node C, all the currents entering and currents leaving are equal or algebraic sum of the current should be. Yes or not? Yes or not, Atul Sharma? At node C क्या है? VC minus VB by C minus क्या है? Directly V, right? V. R minus delta R, sir, this R minus ground by R plus delta R minus V by R. सही है सर? VC minus V by R minus delta R, VC minus ground by R plus delta R, VC by R हो गया. तो उसको कैसा सॉल्व करना है इधर क्लियरली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल VC को निकालने के लिए क्या करना है? सपोज इफ आई एम टेकिंग CI,
No, if I take r common here, तो 1 minus delta r by r होगा plus v by, एक r common, it will become 1 plus delta r by r होगा, एक v minus v by r, तो अभी क्या होगा यहाँ से r r gets cancel, r this, हमको डेल्टा आर बाय आर को निकाल सकते हैं गेज फैक्टर का, तो गेज फैक्टर का एक्सप्रेशन है हमारे पास डेल्टा आर बाई डेल्टा एल बाई एल, यहां से आपने निकाल सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इज गेज फैक्टर इन डेल्टा एल बाई एल, निकाल सकते हैं गेज फैक्टर कितना दिया है 2 दिया है, स्ट्रेन कितना दिया है 2 10 4 -2 क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कहा दिया है क्वेश्चन में, द डाटा इज गेज फैक्टर 2, स्ट्रेन अप्लाइड इज 0.02, तो कितना आएगा आपको, तो 0.04 आएगा, 0.04, तो इधर सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट EC माइनस V बाई 1 माइनस 0.04 प्लस EC बाई 1 प्लस 0.04, EC माइनस व्हाट इज V my dear, so VQ is equal to VP 0.5 by 1 equal to, ये जल्दी बताइए VC का आंसर कितना आ रहा है, VC का आंसर कितना आ रहा है, जितने लोग सेशन को देख रहे थोड़ा सा पेशेंस से कैलकुलेशन करना है, should maintain the patience, then only you can answer these questions. ये क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसर्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रिडजेस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑप एम्प्स, VC कितना आ रहा है, अतुल शर्मा व्हाट हैपेंड, आर यू फॉलोइंग द क्लास और नॉट, अरे जो क्लास हो रहा है उसके पर ध्यान रखो ना, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है ना इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो VC का आंसर बताइए जल्दी, no sorry I can't explain again and again my dear, you should be very clear in the analog electronics, perfect in analog electronics my dear, without analog electronics and network theory you cannot solve the transistor question, हमको V naught चाहिए, V naught के लिए the question asked my dear, V naught is asking to find out the V naught, मुझे first V चाहिए, V चाहिए, to find out the VP मुझे first VA चाहिए, तो यहाँ at EA we can apply the voltage division rule, why because ये current दो current same, क्योंकि ideal op amp में current cannot enter, so these two resistors are getting the same current, so at node A I can apply the voltage division rule, so at node A R by R plus R into, and this 0.5 volts is equal to VP होगा क्योंकि बोथ सेम लाइन में है, अगर VP next at C I cannot apply the voltage division rule my dear, the reason here is this current is splitting here, the current is splitting, I cannot apply the current division is happening, as a current division is happening I cannot take the rule, that's why मैंने current division को जा रहा हूँ, what is the current division, so with respect to this node all the currents passing through the node is equal to 0, right or not, अरे यार बताओ यार, नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है ना आपने, सर्किट थ्योरी पढ़ा है ना आपने, एनालॉग पढ़ा है ना आपने, तो VC minus V, VC minus this voltage if you take supply voltage, VC by R minus delta R plus VC minus ground by R plus delta R, VC minus VQ by R is होगा, तो इसमें से हमने R को कॉमन लिया है, तो मुझे क्या होगा डेल R by R आएगा, ये डेल R by R के लिए हमने गेज फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करो, आपको VC आएगा, VC का वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताओ बेटा, VC का वैल्यू कितना आ रहा है, नो 0.921 रॉन्ग, चेक करो, VC का वैल्यू जल्दी कैलकुलेट करो बेटा, कितना आ रहा है आपकी साइड से, कोई आंसर 0.92 रॉन्ग है, क्लियर सर क्रिस्टल क्लियर, लेकिन आंसर चाहिए मुझे, एटर्निटी 0.921 नहीं आ सकता शायद, चेक इट, ओके फाइंड आउट द VC, अगर VC आने के बाद हमको क्या चाहिए, V naught चाहिए, तो टू गेट V naught व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई वन मोर नोड एनालिसिस यहाँ से, तो VQ minus V by R, V naught by 10 RB,
So node analysis. So at node analysis को apply कर रहा हूँ मैंने. So at Q, minus V by R plus minus V naught by Q minus V naught by 10R is RR gets cancelled. आपको ऑलरेडी VQ आ चुका है. VQ कितना है? VQ is equal to 0.5 V, right? तो VQ कितना है? 0.5. VC कितना आ रहा है बेटा? Yes, प्रवीण. Yes, 0.513 is the right answer. Very good, exactly. 0.513 V आ रहा है. 0.513 V आ रहा है. Substitute here. 0.513 आएगा by divided by 1 plus क्या है? 0.5 V है and V नॉट हमको पता नहीं. देन यहाँ से आपने V नॉट को निकाल सकते. कितना आएगा V? तो 0.5 माइनस 0.513 कितना आ रहा है इधर? 0.013. 0.05 0.1. So plus 5 coming as 0.03 coming as minus, sorry, this plus 0.01 divided by 0.3. V naught is 0.3. Superb concept. This is a beautiful analog. अरे मैं ब्लॉक करता हूँ आपको. अतुल शर्मा मैं ब्लॉक करूंगा. This is the third time you are interrupting the class. I already informed you. I am not going to teach optical instrumentation in this series. क्योंकि कल से हमको अलग सेशंस है. ये YouTube series especially divided for sensors. Okay, already this is the third time I am telling you. Okay, आंसर कितना आ गया? 0.3. Very good question. Positive 0.37. So the right answer 0.37. अतुल शर्मा मैं आपको रिप्लाई दिया हूं. ये सीरीज में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हो सकता बेटा. हमको जो शेड्यूल है अलग शेड्यूल बनेगा. ओके, तो कल से हमको डिफरेंट शेड्यूल्स है. तो आज के लिए मैं सेंसर्स को क्लोज कर रहा हूँ. सेंसर्स को तो 0.37 वोल्ट आंसर मिला आपको, राइट? डोंट डिस्टर्ब द क्लास बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कंप्लीटली. एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ. बिकॉज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है. चलो, a U-tube manometer of tube diameter D is filled with a liquid of zero viscosity. If the volume of the liquid filled is capital V, then the natural frequency of oscillations equal level about its mean position due to small perturbations is dash. The GATE 2012 2 marks का सवाल है. तो ये आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को? अरे आज का क्लास को फोकस कर लो ना. तो ऐसा हो रहा है बच्चे. अरे आपको गेट के लिए क्या तैयार हो रहे हैं? मुझे प्लान कर रहा हूं. मैं प्लान के साथ एग्जीक्यूट हो रहा हूं. A U-tube manometer of U-tube diameter D is filled with a liquid of zero viscosity. My dear students, this is हमारा U-tube manometer का डायग्राम है. So if you see the U-tube manometer, the U-tube manometer, the U-tube, we are going to use the manometric, my dear. We are going to use the manometric
द मैनोमेट्रिक, तो दिस पर्टिकुलर मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो कुछ है, particular manometric fluid है, having generally there are certain properties for this manometric fluid. Manometric fluid have zero viscosity. Manometric fluid is having better frequency response. So because of that, what happens to know? So there is a meniscus is possible here. Meniscus will be oscillation. Okay. So if you see this particular thing as the length of this particular arc as L, the natural frequency of the natural frequency के लिए फॉर्मूला है Fn is equal to 1 by 2 pi square root of 2g by. Atul, are you there in the session? If you are there in the session, please try to answer this question first. ऐसा बार बार ऐसा डिस्टर्ब मत करना. जो लाइव क्लास हो रहा है यूट्यूब में, आपका अटेंशन ये सब्जेक्ट पर नहीं है तो आप जा सकते. अगर आपको ये सब्जेक्ट पर आपका अटेंशन नहीं है, आप जा सकते, आराम से जा सकते. ओके, क्लास को डिस्टर्ब मत करना. अगर आपको क्लास से इंटरेक्ट करना चाहते हो जरूर आंसर करो. ओके, अगर ये आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लग रहे हैं, अगर ये क्वेश्चंस पूरा आपने कंप्लीट कर चुका है, ऑफ दैट बॉदर अबाउट इट, आराम से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये रिवीजन हो सकते हैं आपके लिए. ओके, अतुल बोल दे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 by 2 pi into square root of 2g by L. यस, 1 by 2 pi square root of 2g by L. So L को कैसा निकल सकते हैं? So वॉल्यूम इज, तो बच्चा इतना कंजूस रहते हैं ना, इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट चाहिए बस, इवन द रेस्पॉन्स आल्सो नहीं देते वो बच्चों. ओके, दिस पीपल वोंट गिव अ रेस्पॉन्स टू द फैकल्टी. ऐसा कैसा होता है ना बच्चों, आपको क्या चाहिए वो डालते, कमेंट डालते. अरे एक कमेंट की वजह से जितने लोग डबल ई लोग, ईसी लोग, आईएन लोग सेशन को देख रहे एंड फिर वापस भी नहीं आते, फिर उसको रेस्पॉन्स भी नहीं देते हमको. इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन हमारा पूरा ऑप्शंस में वॉल्यूम है, डायामीटर है. पूरा ऑप्शंस में हमको वॉल्यूम है, डायामीटर है. तो कैसा होगा, तो कैसा सॉल्व करना? ये 2 मार्क्स का सवाल पर पूछ गया, 2 मार्क्स का सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा. तो वी हैव टू डू सम सिंपल कॉमन सेंस, सिंपल मैथमेटिक्स. हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? लेंथ है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ सकते हैं. सो दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माय डियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड दिस लेंथ. तो कैसा लिख सकते हैं हम? तो L इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया लिख सकते. ओके ना, कैपिटल ले लेंगे, बस हो रहा है होगा. तो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया होगा. ओके, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 by 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ 2g by L होगा. L का फॉर्मूला कैसा लिख सकते हैं हमने? वॉल्यूम पर एरिया लिख सकते हैं, वॉल्यूम पर एरिया निकल. so that means particular formula will become as 1 by 2 pi square root of 2g into area by volume लिख सकते हैं. एरिया को हमने पाई डी स्क्वायर बाई 4 निकाल सकते हैं. तो दिस इज 1 by 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ 2g, एरिया को हमने क्या निकाल सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बाई 4v लिख. तो आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए बेटा, ऑप्शंस में क्या क्या है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू, तो ईयर 2 है, 2 रूट 2v आएगा, रूट पाई है इधर, d बाहर आएगा एंड दिस इज पाई बाई दिस 2 इंटू है. ओके, तो इधर पाई आ गया, तो हमने पाई इंटू पाई निकाल सकते हैं. तो वन ऑफ द रूट पाई गेट्स कैंसल. सो फार्मूला क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, का फार्मूला है बाई 2 पाई square root of by v. Am I right? 2 root 2 pi. सही है ना? यह है सही आंसर. ऑप्शन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन राइट आंसर. मजा आ रहा है सेशन को? सेशन आप एंजॉय हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सेशन को?
Datta, are you there? Mohan Sai, are you there? Eternity, are you there? Praveen Tiwari, are you there? Yeah. Sir, कैसा remember करना है? One important point I want to tell you, YouTube manometer is the example of second order system, my dear. So for our second order system है, for our second order systems we are having the natural frequency. Natural frequency का formula है square root of k by m. So always you can remember the natural frequency of any second order system resemble this formula. इधर भी आप ऐसा है देखो L by A. Suppose if you see particular frequency, you can convert this length if you write volume by area, and the volume if you write in terms of density and mass and volume, formula also proportional to like this. Fn is equal to 1 by 2 pi square root of k by m. Constant में आपको आता है system. तो ऑलमोस्ट द सेम फ्रीक्वेंसी फार्मूला है. कैसा लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई एरिया निकाल सकते हैं. वॉल्यूम को डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी. ऐसा निकाल के यही फॉर्म में आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स मास नीचे होना है. बेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस के लिए मास कम होना है. अगर मास कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा. चलो, try to answer this question. Yeah. So there is a cantilever beam, my dear. Cantilever beam, like a cantilever beam. This cantilever beam is attached to a surface. Fixed surface को cantilever beam attach हो चुका है. The figure below shows various configurations of banding of a strain gauge to a cantilever subject to bending force. इधर मैंने bending force apply कर रहा हूँ. जो कुछ a foil type of strain कहाँ रखूँ? Where I should place? If I place the position of this particular strain gauge, exactly force is applying that like this, or perpendicular to this, or with an inclination. So question क्या पूछ रहे? Which configuration gives the maximum change? Configuration gives the maximum change for this particular force. सही आंसर क्या होगा? P, Q, or all Q equal change in resistance. In several of people are almost 16 students are watching the session. Try to give right answer. R. Okay. Why R says P? Always strain gauge has to be placed. Strain gauge कहाँ place होना है? जहाँ आपने force apply कर रहे के नीचे आपने strain gauge को apply करना है. इस वजह से क्या होगा? That particular strain gauge पूरा stress को experience. So where the force is applied exactly under the bottom, under exactly that particular point of location, maximum करने की chances. Option P is the right position. क्योंकि this is perpendicular, so it is going to experience not much strain comparatively this particular strain. Here lateral strain experience होता है. Strain gauge has to be placed such a way always that particular maximum strain. एक cantilever beam structure है. Cantilever beam structure के लिए अगर आपने free end पर force apply कर रहे, that particular cantilever beam bends like this. And cantilever beam bends like this. The strain gauge is also in that particular mode. What happens? It is to make certain compression, sorry, elongation. Going to same like surface कैसा bend होता है, strain gauge भी ऐसा bend, elongation हो जाए. Got it, my dear? So option P is the right answer. Not R, my dear. Why? Because it is in cross, not experience the elongation. So whenever you are applying this particular, going to elongation का बोलते plus delta L बोलते. So a surface is going to experience longitude. अगर longitude कर रहे डायरेक्शन में आपने अटैच करो, strain gauge ऐसा expand. So the right answer goes to option E. Here P is the right answer.
ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है। ओके मोहन, 7 है आज। एमसीक्यू क्वेश्चन है, गेट 2007 में आ चुका है। अभी क्लियर है ना? या आंसर प्लीज। The most suitable pressure gauge to measure the pressure in the range of 10 to the power of -4 to 10 to the power of -6 are. आंसर क्या हो सकता है? बिलोस, बारोमीटर, स्ट्रेन गेज, पिरानी गेज। स्ट्रेन गेज, पिरानी गेज। Always remember, my dear, bellows, the strain gauge, these are suitable for high pressure. These are suitable for high pressure. Pirani gauge is for low pressure, my dear. Pirani gauge is for low pressure. Barometer is for atmospheric pressure. तो लो प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट्स बार होता है, लो प्रेशर का यूनिट टार होता है। टार इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, दैट इज 1 mm ऑफ Hg को हम टार बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एलवीडीटी, गेट 1988 में आ गया। टॉपिक इज रिलेटेड टू एलवीडीटी, माय डियर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। The two secondary coils of LVDT have been wrongly connected as shown in the figure, then the input-output relationship would be dash. Graph state, U shape, straight line, opposite straight line. सचिन कुमार कैसे हो? कैसे करना है? See, for example, in LVDT, basically the connections कैसे होगा? In LVDT, we are having a primary winding, two secondary windings connected in series opposition, and in between them there is a ferromagnetic core, and for the particular ferromagnetic core we are applying the displacement. So this is a primary current, so this is a primary excitation voltage, and here हमको मिल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, वन सम E2, and this output voltage को हम ले सकते हैं नॉट और E differential output. So this differential output is going to become ES1 minus the basic understanding of LVDT. Okay, yes. अगर ये कोर एग्जैक्टली सेंटर है, क्या होगा? कोर सेंटर में तो क्या होगा? ES1 एंड ES2 दोनों इक्वल होगा। एग्जैक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम इक्वल, देन E डिफरेंशियल भी 0 होगा। अगर ये ferrous moves in the direction of ES1, differential will be more towards ES1.
अगर ये पर्टिकुलर फेरस मूव्स डाउनवर्ड, ई डिफरेंस विल बी मोर टुवर्ड्स द ES2, नेगेटिव आ जाएगा. तो एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा? एक्चुअल ग्राफ, so this the actual graph. So this is हमारा displacement, the output voltage is a zero displacement, the positive displacement, the backward displacement. Displacement is equal to zero, exactly center है, output voltage भी center है. As a displacement is increasing, क्या होगा? ये ऐसा जाएगा. Displacement is decreasing, ये ideal graph actually. So this is the actual graph, the ideal graph. Is the ideal graph, my dear. Understood? ये आइडियल ग्राफ है. लेकिन यार क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस बोल रहे हैं आपको विशाल? इटर्निटी. क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन में आपको ये सीरीज में है. व्हेन दे आर सीरीज, डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली सीरीज में क्या होगा? इफ यू सी द पॉइंट, इफ दे आर सीरीज, क्या होगा? एट डिस्प्लेसमेंट जीरो, देयर विल बी सम वोल्टेज. as you are moving to the forward, definitely there is some, slowly it will reduce. You're moving to backward, slowly it will come down. So this cannot be the answer, this cannot be the answer, this cannot be the answer. So option A is going to be the right answer. Why? Because they are connected in the series. My dear, ये connected in the series, ये series opposition नहीं है. Connection diagram wrong है, very clearly question में दिया है, wrongly connected. The series connection, my dear, in series connection we are going to get a constant voltage, and as the displacement goes on increasing, definitely it's going to make our all. मजा आ रहा है ना बेटा? अरे एक बार सेशन को लाइक करो बेटा, थम्स अप दिखाइए सेशन को. जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए, आपका एक्सप्रेशन दिखाइए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Try to answer this MCQ. Is a MCQ question asked in GATE 2020 beta, one of the latest paper. क्या पूछ रहे क्वेश्चन में? If I is the current flowing through a Hall effect sensor and B is the magnetic flux density perpendicular to the direction of the current, the Hall voltage generated. ये क्वेश्चन डबल ई स्टूडेंट्स के लिए, EC स्टूडेंट्स के लिए इजी है. डबल ई स्टूडेंट्स के लिए, EC स्टूडेंट्स के लिए इजी है. ओरिजिनल वन इज नॉट इन सीरीज रे मोहन साई. अरे मोहन साई क्या देख रहे हैं आपको? ये सीरीज है क्या? सीरीज is like this. The flux direction gets opposed. The flux direction is opposed, my dear. తెలుగు కూడా వినబడి బతికిపోయినవరు భయ్, లేకపోతే డౌట్ మస్తు కొడుతుంది. నేను దగ్గరికి వచ్చి తెలుగు కూడా అయిపోయినాను. ये 2020 आंसर बताइए बेटा. सर गेट ESC 2024 कुछ नो आइडिया. अभिषेक कुमार अभी तक कुछ आइडिया नहीं है. इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द हॉल इफेक्ट सेंसर, ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करना? अतुल जी उधर है आप? अतुल जी किधर गए रे? तो दिस इज अ हॉल इफेक्ट डिवाइस. So this is our Hall effect sensor which is having certain thickness. तो यहां से आपको करंट जा रहा है.
and there is a magnetic flux density here under a magnetic field. So this particular magnetic flux density मैं लिख सकता हूँ B, and this is the current I, and this is the ST. Then what happens? When a current carrying conductor traveling in a 90 degrees magnetic field, then definitely क्या होता? At the edges there is a possibility. Hi Kamli, how are you? When a current carrying conductor placed in a transverse magnetic field, it experiences an electromotive force at an angle of 90 degrees to the direction of the current. So now what happened? The particles which are moving here, the electron particles which are moving, definitely they are going to get deflected because of the magnetic flux density. Once they cross the magnetic flux density, again they are going to become normal. So at this particular edges, my dear, at this particular edges मुझे क्या होगा? At this particular edges मुझे एक हॉल EMF डेवलप हो जाएगा. So this particular hall EMF is proportional to the magnetic flux density. This particular hall EMF is proportional to the current. This particular hall EMF is inversely proportional to the thickness. So if you write a common equation, my dear, so it will be P into I by T, my dear. If I remove the proportionality, आपको क्या मिलेगा? एक proportional constant मिलेगा. So that is a Hall coefficient, my dear. So that is a KH into B into I by T. So this is the Hall EMF formula. मजा आ गया? हाँ. तो अभी क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे क्वेश्चन में. The Hall voltage generated is inversely proportional to both I and B. गलत है. Directly proportional to both I and B. ये सही है. Inversely proportional to I and directly proportional to B. ये भी गलत है. Directly proportional to I and inversely proportional to B. ये भी गलत है. So the right answer is this, because the Hall EMF का formula है Hall coefficient into magnetic flux density to current by done. Let's go for the next question. Try to answer this question. ये क्वेश्चन गेट 96 का क्वेश्चन है. So there is a LVDT. The secondary induced voltage of LVDT as shown in the following figure. At null position, V1 is given as 1.0 volts with a phase angle of 0 degrees. V2 is given as 1.0 volts with a phase angle of 10 degrees. That means both are not same. They are connected in the direction. Then the null voltage means the voltage which is going to get as null. That is possible when both are going to be V1 minus V2. Null voltage means what? Whenever this particular ferromagnetic core is exactly at the center, जो कुछ output voltage आ रहा है ना, so that output voltage is the null voltage, V1 minus V2 होगा. So what is the answer? So E differential is equal to V1 minus V2, sir. So V1 क्या दिया है सर इधर? V1 का amplitude 1 volt दिया है सर. So V1 का amplitude 1 volt दिया है सर. So this is 1 volt sir, minus V2 भी 1 volt है sir. So 1 volt minus 1 volt, answer is equal to 0 sir. So option A is the right answer, right? क्या option A right answer हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा. Is option A is going to be the right answer? How many of you agree with the answer option A? No.
ऑप्शन ये नहीं हो सकता है क्योंकि द फेज एंगल इज गिवन माय डियर. So how to write this V1? So V1 can be written as 1 volt with a phase angle of 0 degrees, means you can write it as 1 volt into, in a Cartesian form, e power j 0 degrees. That means you can write it as 1 volt into cos 0 plus j sin 0 होगा. V2 क्या है? V2 is equal to 1 volt 10 degrees. That means 1 volt into e power j 10 degrees. That means this can be written as 1 volt into cos 10 plus j sin 10 होता है. तो cos 0 1 है, sin 0 0 है, तो ये क्या होगा? कम्स 1 वोल्ट. एंड ये क्या होगा? cos 10 कितना होगा रे? बोले रे बाबा 0.98. So this is 0.984 प्लस sin 10 कितना है बेटा? sin 10 is equal to 0.1736. 0.1736. Okay, so what is the output E differential? E differential आपको मिलेगा V1 minus V2. That means 1 volt minus 0.984 minus j 0.173, my dear. So 1 minus 0.984, that is coming as 0.016 minus j 0.173. तो E differential क्या है? मैग्नीट्यूड निकालो. E differential का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? जल्दी बताइए. स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर बताइए. आप क्या कर रहे हैं? इतने लोग देख रहे हैं सेशन को. नो आंसर इज कमिंग फ्रॉम योर साइड. क्या सार ही कैलकुलेट करेगा? सार ही आंसर देगा? कल भी सार में एग्जाम में सार ही लिखेगा क्या? हाँ, अल्टरनेटिव का आंसर मिला 0.17. वेरी गुड. .1737 is the right answer. 0.1737 is the right answer. 0.14. मजा आ गया बेटा? हाँ, वेरी गुड. Superb. Definitely the students who are spending the time here on YouTube session of the sensors and distance, definitely they are going to be benefited. Next coming 11th Saturday you are going to write the GATE exam. आपको बहुत अच्छा उपयोग होगा. मेरा ब्लेसिंग्स. क्योंकि जितने लोग ये सेशन को देख रहे हैं, यही टाइम पर, ये प्रेशर सिचुएशन आपने डिसीजन लेके GATE IN पेपर देना है. डेफिनेटली दिस आंसर बताइए बेटा ये क्वेश्चन का. So one of the beautiful questions from the capacitive transducer, ये 2006 में आ चुका है. क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन है. ये 2006 में क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना बहुत दिक्कत है, लेकिन ट्राई करो कैसा करना है. Tough to
तो अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम इटसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर. यहाँ दोनों कैपेसिटर प्लेट्स हैं. ये टू कैपेसिटर प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप है. सो ये 10 सेंटीमीटर्स का गैप, 10 सेंटीमीटर्स लेंथ, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, दिस 4 सेंटीमीटर, दिस 6 सेंटीमीटर्स. C1 is forming between this triangular plate and the rectangular plate. C2 is the capacitance forming between this triangular plate and rectangle. क्या क्वेश्चन है, क्या कमाल है. And these two capacitors are part of that. So first is asking the C1 C2 values. The C1 C2 values को कैसे कैलकुलेट करना है. So what is the question given? देखो, first of all is taken one triangular plate like this. And another triangular plate here. Negligible gap. एंड यहाँ आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट भी अटैच किया. नाउ दिस इज द फर्स्ट फिक्स्ड प्लेट F1, द फिक्स्ड प्लेट F2, दिस पर्टिकुलर पिंक कलर द मूविंग प्लेट. तो ये डायमेंशंस आपको क्या है, इस पर्टिकुलर डायमेंशंस क्या है देखो बेटा. तो दिस इज अवर 10 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, है 10 सेंटीमीटर्स, है 4 सेंटीमीटर, है 6 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट कैपेसिटेंस इज फॉर्मिंग बिटवीन F1 एंड दिस मूविंग प्लेट, सो उसको हम बोलते हैं C1. नेक्स्ट सेकंड कैपेसिटेंस इज फॉर्मिंग बिटवीन दिस F2 एंड द मूविंग प्लेट, उसको हम बोलते हैं C2. तो C1 का फॉर्मूला क्या है, C1 का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन C ऑन द प्लेन अरेंजमेंट. फाइंड क्या करना है बेटा, C1 C2 को फाइंड आउट करना है. अरे क्या क्वेश्चन पूछ रहे, अरे इटर्निटी. C1 C2 को कैलकुलेट करो बेटा जल्दी. सो उसके ऊपर क्या हो रहा है हमारा, रेक्टेंगुलर प्लेट इज मूविंग लाइक दिस, देयर इज अ गैप, rectangular plate is moving like this. A rectangular plate is making capacitance formation between F1 and this moving plate. So C1 is the capacitance, F1 is the capacitance between F1 and M. F1 and M ये moving plate है. Okay, तो C1 का फॉर्मूला क्या है, F1 is equal to epsilon naught into epsilon R into A1 by E है. लेकिन उसके बीच में क्या है, गैप एयर है. तो क्या होगा, C1 is equal to epsilon naught into 1 in overlapping area 1 A1 into D. And the interesting thing here is हमको D दिया है. What is the D? You see the question, the gap between the plates is given as air gap. The air gap is given as 1 mm. मजा आ रहा है. So this air gap is 1 mm. तो आपको ये air gap दिया है बेटा. So this is 1 mm. इस एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 into 10 to the power of minus 12 है. The most important thing is the A1 calculation. A1 कैलकुलेशन करने के लिए एक ही टिप है आपके पास, that is थीटा. So what is the overlapping area? Overlapping area को कैसे कैलकुलेट करना, उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है. See what is the overlapping zone my dear? So this is the overlapping zone ना. So what is the overlapping zone? This is the overlapping zone ना. Particular the overlapping zone क्या है, so how to calculate this area? To calculate this area I can take the trapezium. So this is our A1, E1,
this is h, this distance is given, this is the h. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होगा माय डियर, फटाफट कैलकुलेट करो, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू a1 प्लस b1 होगा ना। तो लेकिन h इज इक्वल टू दिस 4 सेंटीमीटर्स, बट a1 b1 को कैसा निकलना, दिस इज द a1 दिस इज द b1। मजा आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, कितना दिक्कत दिख रहा है आपको, समझ रहे हैं आपको, एटर्निटी। This was the standard of gate instrumentation, my dear. This was a golden days of instrumentation. In 2000 before, we used to have a standard questions in instrumentation. बहुत दिक्कत है इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो A1 B1 को कैसा निकालना है, आपने एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं A1 B1 के लिए। क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते रे, tan थीटा यूज कर सकते ना। ये कितना दिया है, डायमेंशंस देखो बेटा, डायमेंशंस क्या दिया है जल्दी देखो, दिस इज 10, so this is given as 10, so this is 10, this is 4, 6, so tan थीटा के लिए हमने क्या डायमेंशन यूज कर सकते हैं इधर, जल्दी बताइए। तो फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू 10/20, वन डायमेंशन आ गया बिग ट्रायंगल से। tan थीटा इज इक्वल टू 10/20 वन ट्रायंगल। मीडियम ट्रायंगल से और एक आ गया tan थीटा एक्सप्रेशन, tan थीटा इज इक्वल टू a1/10। आर यू फॉलोइंग इशिका, आर यू फॉलोइंग एटर्निटी, आर यू फॉलोइंग इंफिनिटी, आर यू फॉलोइंग जीरो। tan थीटा इज इक्वल टू b1/6। तो यहां से आपको a1 b1 निकाल सकते हैं ना सर। इज देयर इज न्यू बैच फॉर गेट 2024 जॉइन पराक्रम बैच, so I am not having any idea, please definitely our team will give you some answer for this, so definitely you can post the question in the forums। तो अभी a1 b1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, बताइए a1 कितना आएगा, जल्दी बताइए a1 का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताइए, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत सारा क्वेश्चंस करना हो। a1 कितना आ रहा है, b1 कितना आ रहा है, a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी जल्दी बता रहे भाई। a1 कितना आ रहा है, 5 आएगा, एंड b1 कितना आएगा, 3 आएगा, दैट्स इट। तो सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस इज 1/2 सर, h इज इक्वल टू 4 सर, इक्वल टू 5 सर, दिस इज 6 सर, सॉरी 3 सर, so this is 3, so 5 plus 3 8 into 4 32/2, 16 centimeter square is the area of cross section। ओके समझ गया आपको, फॉलोड। यस मोमेंटम, अभी मोमेंटम आ गया, उसके बाद लीनियर मोमेंटम आएगा, उसके बाद रोटेशनल वेलोसिटी आएगा, उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा। अरे पूरा साइंटिस्ट जितने लोग मर गए वो पूरा आके मेरा लेक्चर को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्राइड फील हो रहा है। अरे अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आएगा, न्यूटन जी आएगा। ओके तो कैपिटल A1 का फॉर्मूला कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यू कैन आल्सो कैलकुलेट A2 माय डियर, so this is our A2। तो अच्छा दिख रहा है ना आपको, दिस इज आवर A2 माय डियर। तो यहां से आप निकालना है और A2 का निकालना है। ओके चलो ऐसा। सिमिलरली यू प्लीज फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी, A2 B2 फाइंड आउट करो, कैपिटल A2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। तो कैपिटल A1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लीज फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। C2 कितना आएगा, C2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। तो नाउ प्लीज फाइंड आउट द C1, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A1/D है, D इज गिवन एज 1 mm। C2 कितना है, C2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट ऑफ A2/D है, तो D इज ऑल्सो 1 mm।
तो प्लीज सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी कितना आ गया आंसर। आंसर कितना आएगा C1 एंड C2? फटाफट जल्दी बताइए बेटा। लॉ ऑफ मोमेंटम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एटर्निटी, इशिका दत्ता, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, फास्ट करो। दिस इज 8.85 into 10 power minus 12 divided by 10 power minus 3 into 15 to 10 power 4, 1.4, that means 14.16, 14.17 picofarad. So option B is the right answer. Option B is the right answer. कितने लोग सेशन को देख रहे हैं, आपको सेशन अच्छा हो रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है आपको? 10 people watching the session, 10 people are watching this session. सही है आंसर? आंसर जल्दी बताओ बेटा, कितना आ रहा है आपको? सही आ रहा है? 14.17 and 21.25. This 21.25. 14.17 and 21.25. Okay. Now continuation. These two capacitors are forming an analog circuit. These two capacitors are forming an analog circuit. ये क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Continuation. So this is a C1 14.17 picofarads and this is a C2, this is the 21.25 picofarads. So this is a C2, this is a C1. They are part of parcel of a analog circuit. तो यह एनालॉग सर्किट को कैसा सॉल्व करना, दिस माइनस एंड दिस। तो फिर से आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं डायग्राम लिख रहा हूं इधर, तो ध्यान से सुनो। तो दिस इज आवर वोल्टेज एंड यहाँ अनदर वोल्टेज, तो दिस ग्राउंड सर्किट। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमको जो कुछ वैल्यूज आ गए ना, दिस इज वन वैल्यूज, तो दिस इज एंड दे आर कनेक्टेड हियर। ऑप एम्प, क्या समझ में आपको ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपका माइंड में कैसा आ रहा है, सर ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग लेवल है ना। एंड इन पैरेलल हैविंग वन मोर कैपेसिटर, एनालॉग का नेक्स्ट लेवल है ना ये। So what is the data he has given? 1 volt 100 kilohertz, 1 volt 100 kilohertz. So this he has given as plus minus 1 volt 100 kilohertz frequencies. 1 volt 100 kilohertz. Okay, and C1 C2 this is C3. He is asking the value of V0, my dear. देखो the above sensor, a question gate 2006 में continuation question है. Above sensor is incorporated in a capacitance measuring circuit as shown in the following figure. Assuming ideal op amp, the output voltage कितना है? C3 का वैल्यू दिया है 20 picofarads, वैल्यू दिया है 20 picofarads. हमको ये वैल्यूज भी अवेलेबल है, C1 का वैल्यू ये आप कर सकते। आपको एनालॉग का कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जितने लोग सेशन में EC बच्चे हैं, अरे EC बच्चों आप तो करना है क्वेश्चन को। अरे EC में आपको इतना अंडरस्टैंडिंग है, सिद्धार्थ सबरवाल सर ने आपको एनालॉग इतना अच्छा पढ़ाया, आपको नेटवर्क में दीप्तांशु ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, आपको अभी V0 को निकाल सकते ना। कैसा निकालना है V0 को? V0 को निकालने के लिए पहले ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है। सपोज यू टेक दिस वोल्टेज एज V1 और इफ यू टेक दिस वोल्टेज एज V1, द सेम वोल्टेज V1 हियर। ओके, तो यहां से आपने V1 माइनस 1 वोल्ट बाई Z1, V1 minus of minus 1 volt by Z2, V1 minus V0 by Z3 अप्लाई कर सकते ना। तो एट V1 आपने नोडल एनालिसिस अप्लाई करो, क्या आएगा बेटा? सो V1 माइनस 1 वोल्ट बाई Z1 प्लस V1 माइनस ऑफ माइनस 1 वोल्ट, माइनस ऑफ माइनस 1 वोल्ट बाई Z2 प्लस V1 माइनस V0 by Z3 is equal to, मजा आ गया, सुपर। फटाफट आंसर बताइए। तो क्या लिख सकते अपने?
V1 minus 1 volt. Z1 means 1 by j omega C1. If it comes here, j omega C1, j omega C1 plus. Next, V1 plus 1 volt. V1 plus 1 volt, j omega C2 plus V1 minus V0. V1 minus V0, j omega 3 is होगा. तो यहां से आपको j ओमेगा कैंसिल होगा, j ओमेगा कैंसिल. अभी V1 को कैसा वर्चुअल ग्राउंड 0 ले सकते ना, क्योंकि V1 इज 0 ग्राउंड, 1 is equal to 0. So 0 minus 1 volt, 0 minus 1 volt into C1 plus 0 plus 1 volt into 2 plus 0 minus V0 into so 1 volt into C1 plus 1 volt into V0 into, तो V0 चाहिए तो 1 volt commonly हो, this 1 plus C2 by C3, that is good. तो V0 का आंसर है C1 plus C2 by, आंसर बताइए बेटा कितना आ रहा है, आंसर बताइए बेटा कितना आ रहा है. C1 कितना है 14.17, तो 14.17 प्लस 21.25 डिवाइडेड बाय C3 कितना है 20, आंसर मिलेगा 1. Something we have done a mistake. किया किधर, या इधर -1 वोल्ट ना, सॉरी -1 वोल्ट, -1 वोल्ट, तो आपके इधर C2 minus C1 आएगा. .354. Try to answer this question. गेट 2016 का क्वेश्चन है. Question is related to seismic.
Let us make this question as a last question, my dear. Last session. Okay. So what is the answer? The seismic mass of an accelerometer oscillates sinusoidally at 100 Hz. The maximum displacement of 10 mm from its maximum position, not maximum position. The peak acceleration of the seismic mass is 10. So this question is simple physics IIT JEE का क्वेश्चन है. कैसा करना है देखो my dear, simple harmonic motion में you see the simple harmonic motion, how to understand the simple harmonic motion. So this is our displacement, the velocity, the acceleration. आपको पता है ना displacement and velocity, acceleration, these are the dependent variables है, derivative variables है, x. So this is our displacement. So x is equal to a sin omega t. So amplitude of displacement a होगा. What is velocity, my dear? Velocity is nothing but the derivative of displacement. So that means minus a derivative of cos omega t, a omega cos omega t होगा. So amplitude of velocity क्या होगा? Amplitude of velocity definitely ज्यादा है a omega. तो यहां से आएगा our velocity. So this is velocity amplitude a omega amplitude. Next comes the acceleration, my dear. Acceleration is the minus dv by derivative of velocity. Derivative of velocity means double derivative of displacement. If this makes simplification, a omega cos omega t derivation minus sin omega t, and omega will come again. So minus a omega square sin omega t. So that means the acceleration का peak amplitude ऐसा होगा, is a omega square. So this is acceleration. Okay. So amplitude of acceleration अलग level है. Amplitude of acceleration. So amplitude of acceleration, if you say the peak amplitude of acceleration, magnitude a omega square. So this is the physics ना. जितने लोग सेशन को देख रहे ये amplitude of displacement a है, amplitude of velocity aw है, amplitude of acceleration समझ में आपको फिजिक्स. So यहां से आप निकाल सकते ना. So a omega square is greater than the a omega, this is greater than the a. So peak acceleration amplitude क्या होगा? Peak acceleration amplitude क्या हो रहा है? So this is a peak acceleration amplitude है ना बेटा. तो peak acceleration amplitude क्या है? a omega square है. So this a omega square को हम कैसा निकाल सकते हैं? 2 pi f निकाल सकते हैं ना सर. अभी क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? क्वेश्चन में the seismic mass of an accelerometer oscillates sinusoidally at 100 Hz and displacement is 10 mm. So आप इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं displacement 10 into 10 power minus 3 and this is 100 Hz. So 2 into 3.14 into 100 whole square. तो कितना आएगा आंसर? जल्दी बताइए बेटा. (393.48) 393.84 यूनिट्स क्या है? एक्सेलरेशन ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. Am I right or not? फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है सेस्मिक में का. So the right answer is 39. Yeah, option A is the hello my dear, these are the different questions from the different chapters. Okay,
कुछ तो कॉन्फिडेंस मिला है ना आपको पूरा सेंसर्स के ऊपर, अच्छा कॉन्सेप्ट आ चुका है आप सब लोगों को। ऑलमोस्ट लगभग हमने 30 क्वेश्चन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के पास आज कैपेसिटी में ज़्यादा डिस्कस, वीडी पर डिस्कस किया, स्ट्रेन गेज पर डिस्कस, बेसिक ब्रिजेस पर क्वेश्चन डिस्कस किया, लेवल मेजरमेंट का। तो जितने क्वेश्चंस है ये पूरा, कल भी हमने फीस इलेक्ट्रिक का डिस्कस किया है, फीस इलेक्ट्रिक का क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है। तो ऑलमोस्ट कल पूरा फ्लो चैप्टर डिस्कस किया मैंने सर। तो हाउ मेनी ऑफ आर कंफर्टेबल यस्टरडेज फ्लो चैप्टर, ये पूरा फ्लो चैप्टर में फ्लो ट्रांजिशन डिस्कस किया है। तो प्लीज फॉलो ऑल दिस। तो प्लीज आई विश यू ऑल द, ये सेशन पूरा होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपका करना। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आप लोगों के लिए एनालिसिस, नॉट एनालिसिस में डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर ये चैप्टर से आपको आए तो डेफिनेटली या पीडीएफ मिलेगा भैया, बार बार नहीं पूछ। यस यस मोहन साई, गुड, सुपर सुपर, वॉच रिकॉर्डेड। ये इसका भी पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। एंड डबल ई बच्चों, ईसी बच्चों, आप ज़्यादा मत सोचना, कम समय में मैंने अपना कंटेंट आप, लेकिन ये जो रिपीटेड टॉपिक से डेफिनेटली आपको स्ट्रेन गेज के ऊपर, फ्लो चैप्टर के ऊपर चांसेस है, उसके इतना कॉन्सेप्ट से मैं पूरा दिया हूँ। स्ट्रेन गेज का फ्लो चैप्टर तो मैं एकदम कम समय में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट यूज करके जरूर अपने एग्जाम को लिख सकते। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अनदर सब्जेक्ट, कल और परसों प्लान है तो बताऊंगा, डेफिनेटली आपको कम्युनिटी पेज जाएगी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो लव यू ऑल। कल तो क्लास नहीं होगा बेटा, क्योंकि बच्चों को मत परेशान करना है, कल 10th है ना, बिकॉज 11th दे आर राइटिंग द एग्जाम, maybe they not much before going to the exam, not correct to take the class, that is a point actually, क्लास नहीं हो सकता है, बट आप थोड़ा रिलैक्स माइंड से जाना है, गो विद रिलैक्स माइंड, तो डेफिनेटली आपको। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, लव यू ऑल।